हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। वेलकम टू द डीपी क्रिएशन एडिटिंग गुरु चैनल। तो आज का हमारा एडिटिंग ऑटोडेस्क में अपने फ़ोटो को सीवी एडिटिंग कैसे करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा फ़ोटो नॉर्मल फ़ोटो ये है और एडिटिंग के बाद ये हो चुका है। तो इसको मैंने ऑटोडेस्क में एडिटिंग किया है। तो आज आपको मैं ऑटोडेस्क में ट्रिक्स बताऊँगा किस टाइप से आप फ़ोटो को अपने एडिटिंग कर सकते हैं। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें, कि स्किप ना करें। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए आप आगे क्या देखना चाहते हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते, अपने वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। तो लेट्स गो।
What we do here is go back.
तो यहाँ हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और अगर ट्यून व्यून बढ़ाना है तो टूल्स में जाके अपने हिसाब से लाइट वेट आप बढ़ा सकते हैं। तो इसी टाइप से आप ऑटोडेस्क में एडिटिंग कर सकते हैं। आप ऑटोडेस्क में भी सेव कर सकते थे। स्नैपसीड में थोड़ा सा हल्का मैं कलर दे रहा हूँ, तो जिस टाइप से आपको ज़रूरत है आप कर सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं डेली डेली नए नए एडिटिंग के वीडियो लाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।